Good morning 10th class students. Today we will continue our lesson number 7 constructors. Today we will start from the topic copy constructor. So look at your book page number 369, copy constructor. What is copy constructor? A constructor that is used to initialize the instance variable of an object by copying the initial values of the instance variable from another object is known as copy constructor. Means when one object is copy the value from the another object, then that constructor is known as a copy constructor. So let's see its example. Like here class name is copycon, int ab, copycon is a constructor, int xy will pass the values to a and b, then class abc public static void main. Here you can see there is two objects ob and ob1. Copycon ob is equal to new copycon 5 and 8. This 5 value will pass to x, and then this x will pass the value to a. This 8 value will pass from the main class to y, and this value will pass from y to b. Similarly, we can see here this ob1 object. There are two objects ob and ob1. This ob1 is taking the values from ob. So this is copy constructor. So a constructor that is used to इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये इनिशियलाइज कर रहा है इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग द. तो OB1 क्या कर रहा है यहाँ पे, कॉपी कर रहा है बाय कॉपिंग द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल्स फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कॉपी करता है, दैट इज नोन एज कॉपी कंस्ट्रक्टर. सो कॉपी कंस्ट्रक्टर, this definition you have to learn, and its example, this type of example you can write. These types of program will not come in the exams. में नहीं आते हैं copy constructor के program, but you should know what is copy constructor and give an example. So this part you can give an example. Means when one object is copying the values from the another object, that is known as a copy constructor, and its work is to initialize the values to the instance variables of the class. Now our next topic is, you can see it, features. So sometimes this question can come in the exam. What are the features of constructor, or there are some points kept in mind while using constructor. जब आप यूज़ करते हो, the first point is constructor as a member method should have the same name as that of a class name. constructor का नाम हमेशा वही होगा जो आपके क्लास का नाम होगा या प्रोग्राम का नाम होगा. एज ए कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस वेरिएबल्स. इट डज नॉट नीड टू यूज रिटर्न टाइप. सो इन कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इट इज़ यूज ओनली टू इनिशियलाइज. ये सिर्फ वैल्यूज इनिशियलाइज करता है. The constructor is not called through any object, but it is automatically invoked when an object is created. Hence, you should not try to call the constructor. It means that when you are in the main class, when you are calling the functions like ob.display, ob.input, in the same way constructor you cannot call. constructor को आप कभी भी नीचे main class में call नहीं करोगे, then because it will called automatically. Now our next topic is what is constructor overloading. The process of using a number of constructor with the same name but different types of parameter list is known as constructor overloading. It means एक ही प्रोग्राम में काफ़ी कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर सकते हैं सेम ही नाम से, बट वो जो वैल्यूज़ पास करेंगे वो अलग अलग तरीके से पास करेंगे. लेट्स सी हियर. Now here class name is constructor. Okay, here class name is constructor. There are variables int a and b. This is the constructor. With what type of constructor? It is default constructor. This is also constructor in this program, int xy. This is the which constructor? Parameterized constructor. The third constructor you can see, this is a copy constructor. So the constructor name is same, okay, as the class name, but the वैल्यूज़ वी विल पास टू द कंस्ट्रक्टर बाय डिफरेंट. मीन्स यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर दो बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ कर सकते, और यू कैन नॉट पास द सेम वैल्यूज. मीन्स इट्स हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम बट विद डिफरेंट पैरामीट्रिक वैल्यूज. दिस कंस्ट्रक्टर इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. मीन्स अगर हम एक प्रोग्राम में ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए. ओके, सो दिस इज़ नॉन एज constructor overloading. So sometimes this question comes, what is the difference between constructor and member method? member method means function और constructor में क्या फ़र्क होता है. function और constructor दिखने में सेम होते हैं, but what is the difference between them? The constructor has the same name as that of a class name of as that of a
ऑफ द क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है जो क्लास का नाम होता है, बट अ फंक्शन नेम इज डिफरेंट देन द क्लास नेम. लाइक आप फंक्शन है तो इनपुट फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन, कैलकुलेट फंक्शन, सो देयर नेम इज डिफरेंट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर डज नॉट नीड टू बी कॉल्ड इन द मेन क्लास. कंस्ट्रक्टर को कभी भी हम मेन क्लास में कॉल नहीं करते हैं. अ मैथड इज कॉल्ड इन द मेन क्लास. मैथड को आप लिखते हो ना, ओबी डॉट डिस्प्ले, ओबी डॉट इनपुट, ओबी डॉट कैलकुलेट, नीचे वी कैन कॉल द फंक्शंस. इट विल नेवर रिटर्न एनी वैल्यू, क्योंकि इसका काम सिर्फ वैल्यूज इनिशियलाइज करना है, ये कभी भी कोई आंसर रिटर्न नहीं करेगा. अ फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू. फंक्शन में हम वैल्यूज पास भी कर सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं, या फंक्शन हमें कोई रिटर्न करके, लाइक कैलकुलेट फंक्शन हमें रिटर्न भी कर सकता है. कंस्ट्रक्टर आर यूजली पब्लिक. कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक ही होते हैं. अ मैथड कैन बी पब्लिक और प्राइवेट. फंक्शन जो है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है. So this is your chapter about constructors. So students, you have to write in your copies what is constructor definition. On your book page number 361 in the yellow color highlighted, write that one, what is constructor definition. Then you write how many types of constructors are there: default constructor, parameterized constructor, non-parameterized constructor, and copy constructor. Then the third question becomes, what are the features of constructor? Write any 4 features from that. Page number 362 and 363 it is given. Then one more question will become from 362 page, how we can invoke a constructor. So we can invoke constructor at the time of creating an object of the class. Give this example given on page 362. Item ob is equal to new item. So here class name is item, ob is object, new is the new operator, and item is the constructor. So here when we are creating the object of the class, then we can say it is invoking a constructor. Then we can use a constructor. Then you have to write its types of constructor. What is default constructor? Then give one program example given on page number 365, int n const. Then that example given on page number 363. Yes, this example you can write this as a program. And then non-parameterized, also write the definition. Then the page number 365, non-parameterized constructor, and give example, object created by compiler. That program example you can give. Then what is the parameterized constructor, which is given on page number 367, highlighted in the yellow color. Then you can write the example which is given on that page in the program pconst. Now what is copy constructor? Page number 369, that you can use, and then write its definition and give example which is given on page number 370, copycon program, that you have to write. Only one program which is given upside, that you have to write. Then the last question, what is constructor overloading? Given example, write the definition from page number 3671, and then example program given on page 372, that 3 constructor 3 times where it is written, this full program you have to write. Now the last question from this one is, what is difference between constructor and member method? Write, you can write any 2 differences or 2 or 3 differences you can write from this. The programs you can see here. Now by looking at the program, I hope you understood what type of constructor that is. Side by side I have shown examples also when I have explained the program. So look at it carefully. If you not understood any program, you please message me personally. Thank you students, and have a nice day.